Pranam everyone, Hari Om. We'll start the class. Hari Om. We'll start. Sadashiva-samārambhāṃ Shankarācārya-madhyamāṃ Asmadācārya-paryantāṃ Vande Guru-paraṁparāम्. Shruti-smriti-purāణānaṁ Alayam Karunalayam Namami Bhagavat-pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. We'll do some chanting first. Good. Oh, okay. 1 second, please. I always think I have kept it ready. Mm. Mm. So we'll do some chanting first. I think we have to start from verse 15 today. So we will chant from 10 to 15.
यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद्भिन्नवद् भाति तन्नाशे केवलो भवेत् नानोपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादिभेदवत् पञ्चीकृतमहाभूतसम्भवम् कर्म सञ्चितं पञ्चीकृतमहाभूत सम्भवं कर्म सञ्चितं doing it again पञ्चीकृतमहाभूत सम्भवं कर्म सञ्चितं शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते पञ्च प्राणमनो बुद्धिः दशेन्द्रियसमन्वितम् अपञ्चीकृतभूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् अनाद्यविद्यानिर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितया उपाधित्रितयादन्य आत्मानम् अवधारयेत् पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा So just a very quick overview because of the gap, starting from 11th verse. The entire experience of being an individual, of the individual bhav, sense of reality. Shastras have explored, thought about, questioned it, and various schools of thoughts have emerged over time, and they still keep emerging. It's not ended. So you keep having different theories that keep surfacing. The quest for human being has been, what is it that is final? What is it that is truth? What is it that is complete? What is it that will be unbroken? What is it that will be ever a state of equilibrium, shanti? What is it? What is the purpose of life? Why am I here? Why are we all so many different expressions? Who has made them? Where has all this come from? How long will it be? Is this permanent, the world? ऐसा ही बस हम आते हैं, like those tiny insects that come during the Diwali time. एक रात का existence होता है उनका. They come around that time and they are all where the lights are, and in the morning you find a whole bunch of swaha, all dead bodies.
A whole bunch of dead bodies. Now, they just came for that much from a human perspective. Which reality is real? Is the ant's reality real? Or is a human being's reality real? Is an elephant's reality real? Is a crocodile's reality real? Whose reality is real? ये जिंदगी को लेके ना, जिंदगी जिसको हम जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं, इस जीवन को लेके सबको संशय है. सबको संशय मीन्स एवरीबडी इन अ व्यवहारिक realm, एवरीबडी इंटरैक्टिंग, सबको संशय है. एवरीबडी हैज a doubt regarding certain fundamentals of life. And people have explored this. They have questioned it in the past. And as I just said, various schools have emerged because of it. What makes Vedanta culminative for most seekers? I'm just saying most because, for lack of another word, whoever has approached Vedantic thought, they have been able to finally resolve that there is no more doubts left. सब संशय छिद हो गए. Chidena samshaya. That 15th chapter of the Gita, Ashwatha tree. All our doubts have disappeared. There is no more yearning. There is no more wanting something. There is no more all these questions that I just gave samples of. Obviously, these are not the end. Everyone has their own way of questioning. They were sample pieces. Once a person who starts with their own sample question, अपना ही प्रश्न लेके जब जीवन में आता है और अपने ही प्रश्न को सीख करता है उसका आंसर, and in that process of genuineness, sincerity, I firmly believe that is the only anchor to arriving at the truth. If one search is genuine and sincere, it finally culminates neti, 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 neti karte karte. You arrive at the right understanding. Shastra Vihit understanding. That point, in the quest of that point, on the journey towards that, the minute you've come to Vedantic study, almost everybody has said, now we don't feel the need to discover, explore, figure out, किसी और, कुछ और, कोई और. It stops its pull onto your system. आपका अंतःकरण उसकी तरफ अब आकर्षित नहीं होता. I don't know about most of you, but this is an average for almost everybody who's sought it, and I'm sure it's for everyone, which includes all of you. The minute Vedanta comes, it gives that assurance within. इतना logically present करता है, इतना systematically समझा देता है कि ये सारे प्रश्न जो जीवन को गोल गोल घुमा रहे थे हमारे, कभी इधर भटक रहे थे, कभी उधर भटक रहे थे, कभी रिश्तों में उलझ रहे थे, कभी रिश्तों को छोड़ रहे थे, कभी ज्यादा पकड़ रहे थे. There's so many things we do in a span of our life, wanting the same answers, but experimenting, because nobody has the answer here in the world. So you follow whoever is in front of you, then afterwards you change the lane. कोई और है तो now you follow that, thinking that asha. That asha is the thing that takes you forward. The same asha, when it is in the world, centered in the world,
It takes you to further and further samsar. The same asha, when it is attached to your own quest, अपने ही प्रश्नों के जवाब चाहिए. अब आप अगर कहो जी प्रश्न आते नहीं है, आए नहीं, हो नहीं सकता, कुछ तो आए हैं सभी को. अपने ही प्रश्नों को जब हम ढूंढने लगते हैं तो it takes us towards a point where now you do not need to change lanes. I hope I'm making sense. Well, I'm not making too many metaphors and similes. And this changing lane एक बार जब बंद हो जाती है ना, तो वेदांत जीवन में एक्चुअल शुरू हो जाता है. We may not see the fruit straight away, but the pull of various thoughts in the world that people are experimenting with in life at every 15-20 years, there is a model that changes and it's equally assertive. You realize 1 generation gone. Every generation will seek a new experiment. It pulls people towards it, thinking asha, that asha se, but gone. वेदांत says, ये जो प्रश्न है जीवन को लेके, I always repeat this because this is a fundamental we have to touch base with. अगर जैसे if there's been a gap in the classes, then to reconnect back our thought process, where do you start from? Start from where my questions were in life. वो प्रश्न जिसका जवाब सबके पास नहीं है. My school teachers don't have it. There could be a rare teacher, but it's not in school syllabus. Let's put it this way. Teacher may have it. मुझे वो एजुकेशन में कहीं मिला नहीं. तो हमने क्या किया, हम सत्संगों में जाने लगे. We start seeking a parallel system of education. We hear many people, etc. Fortunately, in our country, I don't know about other countries, but in our country, there is a parallel system. It's like a river flowing. आप कभी भी कहीं पे भी डुबकी लगा लो, आपको हमेशा there'll be a flow of information available which is not in the system of education, present current education. When you start approaching that, and the question remains, and when you finally arrive at some point where you are not asked to do anything at all, कुछ नहीं करना आपको. That's the first point in Vedanta. कुछ नहीं करना. What is the actual relief that comes in the system? Has anybody felt that? कुछ भी नहीं करना आपको. वेदांत में कुछ नहीं करना. And then they start, of course. कुछ नहीं करना means first few months, years goes away. Then what is started? Then it starts to say, हाँ नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा धर्म को जानो. Follow धर्म. फिर धीरे धीरे कर्मों की शुद्धि करो. From कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? Whatever your methods are for seeking, वो कुछ मत करो. Learn something or understand something. The primary importance is in knowing. Karna is subsidiary subject. In college you have this, what are those two things called? Main subject and subsidiary subject. When you're especially doing honors, your honors ka subject. So what is honors ka subject in Vedanta? The honors subject in Vedanta is Brahma Vidya. What are the subsidiary subjects? Pass to करने पड़ते हैं वो भी. So without clearing them, मिलता नहीं degree. So what are the subsidiary subjects? Karma upasana. Subsidiary. They can't become the mukhyam in your life. But you have to clear them. So you clear your karmas, you clear your upasana, gain your ekagrata, gain your own shuddhi, लगे रहो अपने अंदर, in other words. या बाहर से इंद्रिय मुख को विड्रॉ करके, ये जो बाहर इतना ढूंढ रहा था
इस लेन्स को बदल रहा था, कांस्टेंट एक यर्निंग रहती इन, ड्रॉप इट, व्हेन यू ड्रॉप इट देन अंदर का काम सब शुरू. सो हियर इन दिस, डिड आई शेयर द स्क्रीन? आई डिड, है ना? सो हियर इन दिस verse, the explanation has started from what we are interacting as life. I think this much introduction should be enough. What we are interacting as life. हम जिसको जीवन समझ रहे हैं, हम जिसको अपना लाइफ समझते हैं, what is it? He says ये पंच महाभूत से बना हुआ. पंच महाभूत elements. Where have the elements come from? They are Maya Upadhi. Where has Maya come from? Brahman. What is Brahman? Your true nature, जिसको आप ढूंढ रहे हो. Whatever you are searching, I'll put it in this way. Whatever you are searching, that is Brahman. If someone says, no, I want, I want lot of knowledge. Knowledge is Brahman. Where your quest will end in knowledge, that will be Brahman. Someone says, no, I want a lot of love. Where that quest for love will end, that is Brahman. Someone says, I want lots and lots of prosperity. Where that prosperity will culminate is Brahman. Whatever you are seeking, वो सीकिंग जहां खत्म हो रही है, ये लक्षण हमेशा याद रखना है हमको. मेरी सीकिंग जब खत्म होगी, देन शास्त्र सेज यू आर मुक्त. उसको वो मुक्त कह देते. शास्त्र का डेफिनेशन ऑफ मुक्ति इज व्हाट? जब हमारी ये सीकिंग अब स्थिर हो गई, अब है नहीं, शून्य हो गई, शून्य नहीं, व्हाट इज द राइट वर्ड? अब हमारी ये सीकिंग डिसअपियर्ड. like the darkness goes when there is light. It just disappears. As a human being, is that avastha possible? Whatever I am seeking, whatever, name, fame, power, position, status, wealth, relationship, और क्या है? Knowledge, और क्या है? What else? मैं तो हमेशा so many years मैं इस लिस्ट के आगे बढ़ ही नहीं पाई. इससे ज्यादा क्या इंसान सीख करता है? एंड यही चल चल के चलता रहता है. All my seeking, when it culminates, where it culminates, can you imagine? You have had a tough day or a very wonderful day. Where do you say that your day ended? कब खत्म हुआ वो दिन? जब आप सो गए. जब आप सो गए, is that the right word? जब नींद आ गई. जब नींद आई, तब आप सोए. मेरा सोना मेरा एफर्ट नहीं है. नींद का आना मैं को सोने का अनुभव होता है. When has a day ended? जब स्वाभाविक प्रवृत्ति of the day has culminated naturally. It's important. Naturally. Sleep is coming naturally. स्वाभाविकली सब प्राणियों को आती है. No? It's one. I enjoy this thought. I love to look out. And I keep wondering, यार सब लोग एक ही टाइम क्यों सोच, मतलब ओके आवी, बट रात होते ही सब सब प्राणियों को नींद आ जाती है. एंड द बेस्ट पार्ट इज द अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, वहां पे रात नहीं है. वहां सूर्योदय हुआ है और वो जाग गए.
यहाँ सूर्य अस्त हो रहा है, हम सो रहे हैं। वहां सूर्य उदय हो रहा है, वो जाग रहे हैं। मतलब सोना जागना भी, वी डोंट हैव द सेम टाइम एज ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये सन की गति से, अगर वहां सूर्योदय हुआ है तो बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली उठा रही है। वहां सूर्यास्त हो रहा है तो बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली सुला रही है। ये, इट्स फैसिनेटिंग कि एक ही जीव, when you go for a long flight and you have seen sunrise throughout your flight, आप यहाँ से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़े, फ्रॉम फ्लाइट यू सॉ अ सनराइज all the way, then it goes via Japan, I don't know where all it goes, and then you go to the United States of America. Throughout the flight you have, where is the night? Where is the night? And yet at a moment, कभी ऐसा हुआ एक दिन अपना पूरा खिंचता नहीं है? If you have remained awake for more than 8-12 hours, system starts to dilo-dhaloing. It's one of the ways of doing torture in prisons. Not let you sleep is one of the ways they torture. After 4-5 days, the human being goes insane. वो कुछ भी क्या करने को तैयार हो जाता है। आप उससे कुछ भी बुलवा सकते हो तब। Because now he says, just let me sleep. Let me sleep. क्या उसको पूरे जीवन में उसको क्या चाहिए था उसके पहले? पूरा जीवन लगा हुआ था, बस हम लोगों को एक दिन जागरण करा लो। आई मिस दोस डेज ऑल्सो व्हेन वी वर किड्स एंड लोकल एरियाज में जागरण होते रहते थे। नाउ यू डोंट हियर दोस थिंग्स सो ऑफन। मजा आता था बहुत ही। ओ अभी उस कॉलोनी में हो रहा है, अभी उस घर में हो रहा है। द सीजन जब वो जागरण होता था, पूरी रात जागो। एज किड्स इट वाज ग्रेट फन। आज इधर जाओ, आज उधर जाओ, आज यहाँ प्रसाद मिलेगा, आज वहां प्रसाद। पूरी रात सोना नहीं, बड़ा एक्साइटिंग होता था। पूरी रात सोना नहीं, पूरी अगले दिन कुछ करके उठा दे मम्मी। नो वे। The point is, whole life, that man, there is a torture chamber. CSET, Gautamela or somewhere, where the crime rate had increased so much and they had become gangs or something. CSET ही है शायद उस prison का नाम। That man, he was his, it's a very, very strict under new rules of their government to stop the crimes in the society. So they have just picked up, etc., etc. And बड़ी मुश्किल से CNN got a chance, the journalist, for a few minutes to take an interview of the leader of one of the gangs. And for 15 years or something, whatever. His child was 5 years when he left home. The child should have been 21 by now. This father, who was the head of a gang, who has been caught by the government and put in that torture prison, different ways of torturing. Within a few minutes, he said, what is one last thing you want to tell your people? सुना है किसी ने? देख, what is that? What is that one last thing you want to tell your children or your whatever? He says, don't live the life that I have lived. वहां पे मैं राजा था, रास्ते पे डरा के, I was a king there. This is the end. I can't even see the daylight. It's a fascinating revelation. What is the point here? I hope we are connecting it. What is the point? सारी जिंदगी वो कुछ सीख कर रहा था. It fascinates me. सारी जिंदगी that man was looking for power, for wealth, for this, for that, for whatever, and none of us is separate from him. He may be on the extreme case. He means people, a few handful of people are extremes. What about the majority? Are the majority seeking anything else? They have only taken
means that are not वर्चुअस सो कॉल्ड, धार्मिक नहीं है, उन्होंने वो अधार्मिक मीडियम चुना फॉर फुलफिलिंग देमसेल्व्स. बट व्हाट इज एवरीबडी सीकिंग? नाउ आई एम सेइंग, पूरा दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बोलो सोना नहीं है, 3 days के बाद सोना नहीं, 3 दिन तक, 3 दिन जो चाहिए करो, 3 दिन के बाद सोना नहीं. At the end of the third day, हम all that we wanted to do so much on the first day with energy, I'll do this, I'll do blah blah blah. Great, I have. By the third day, we'll say, you take everything away. Let me sleep. It's a very big, you know, हमारे जीवन का हर पल शास्त्र रिवील करता है. हम इसको थियोरी समझते हैं. There is nothing about our life that Shastra is not addressing. This knowledge is not in the form of a vritti gyan alone. ये हमारे अनुभव को दिखा रहा है, दर्पण दे रहा है. It's giving us a mirror. What is it that you want after all this? So much you wanted, all this life we wanted, money, wealth, relations, peace, harmony. किसी ने कहा मैंने अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया घर को मेंटेन करने के लिए, रिलेशन में. दूसरे ने कहा मैंने मैनिपुलेट किया. सब सब सबने अपने अपने तरीके कर लिए. 3 दिन सोना नहीं दोनों को. Those who have taken opposite methods of fulfilling themselves, धार्मिक अधार्मिक, 3 दिन सोना नहीं. दोनों का अनुभव क्या होगा? 3 को 5 कर देते हैं, so that the desperation increases. दोनों का अनुभव क्या होगा? Is anyone still going to want to hold on to what they wanted? They will desperately say, ले लो भाई, तुम मेरा सारा पैसा ले लो, मुझे सब कुछ ले लो, मुझे बस एक सोने की जगह दे दो. I am ready to sleep anywhere. You know, when you see, I used to say when I used to go for classes, and once in a while, you saw on the trucks the manual labor sleeping पत्थर पे सो रहे. And trust me, half a day I went, कल कितना humid था. I went for a walk, I came back फटाफट. Yo, very humid, very humid, very humid. The rest of the half I completed only as an exercise for myself. कि भैया, that means you have not yet understood the value of your life, opportunity. इतने नखरों के साथ हम जी रहे हैं अब, इतना सब कुछ हमको चाहिए. You know why? Because this Panch Mahabhut is available to us. What is the Panch Mahabhut? That Brahman where all my seeking culminates. जो मुझे चाहिए, जब सब कुछ आप मुझसे ले लो, और मुझे क्या चाहिए? Ultimately, what am I going to rest on? In that sleep, what is it that I want? क्यों मुझे नींद प्यारी है? क्यों हमको सोना होता? क्यों भगवान ने ये प्रोविजन दिया है? क्यों ये प्रोविजन? Why did he not? That used to be one of my silly questions as a kid. Two difficult questions I've had, which I have not been able to answer. One question is, why did Bhagwan make day and night? दिन कर देता, आधा जिंदगी कर देता. So if I have to live 80 years, he should have put lifespan 40 years, and बस दिन करो, अपने काम खत्म करो और मर जाओ. That कितना आसान हो जाता जीवन. That was one. Second thing was, ये खाना बीच बीच में खाना पीना. अरे तुम और 20 साल कम कर दो, 20 साल दे दो, बट 20 साल का रिजर्वायर दे के भेजते ना, तो हमको इतना डिसिपेशन नहीं होता. जस्ट फिल इन द सिस्टम. 20 साल रहेगा एक जीव, या कुछ और कुछ नहीं करो, बस अध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो, 20 साल बहुत होंगे. बस उतना हो ताकि तुम्हें उठ उठ के, या अभी योर बॉडी आस्क फॉर फूड, एंड देन इट आस्क फॉर वाटर, एंड देन इट वांट्स coffee, and then it wants that espresso coffee, and then it wants with brown sugar, and then it wants with mocha coffee, and then it wants this, and then it wants Darjeeling tea. इतना टाइम वेस्ट. 20 साल की जिंदगी दे देते, लेकिन रिजर्वायर भर के भेजते.
तो अच्छा होता, क्लेश कम होते जीवन में सबके, कुछ करने को और रह क्या जाता, इफ यू वर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद दैट। सो बट दैट्स नॉट इट। व्हाट इज इट दैट वी रियली 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 आर सीकिंग इन स्लीप? रुक रुक के भगवान ने प्रोविजन दिया क्यों है? आफ्टर एवरी फ्यू आवर्स यू हैव टू स्लीप, एंड इफ स्लीप इज डिनाइड इट्स टॉर्चर, you will lose sanity. Why is this provision given for all pranis? You've seen cats and dogs sleeping? Yeah, so cute. You've seen birds sleeping? They're so cute they look. The children look so cute when they sleep. They look so adorable. Oh, when you are sleeping, how are you so adorable? And when you wake up, no comments. That Jiva wakes up, no comments. जब सोता है तो इतना अच्छा शांत अपने स्वभाव में बैठा, ऐसा क्या है नींद के साथ? इट्स वेरी, आई एम connecting it in life as life with this verse that we are now going to revisit. ऐसा क्या है हमारे नींद में कि जो हमको भगवान ने बाय डिफॉल्ट दिया है, सब प्राणियों को दिया है, वहां पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट सब मुझे जो कुछ भी मिला है, आई एम रेडी टू गिव दैट अप फॉर दैट। अपनी नींद के लिए मुझे सब कुछ, मैंने जितना भी जीवन में कष्ट सहा है, मुझे जो कुछ भी मिला है, वट एवर आई हैव अर्नड इन माई लाइफ, एंड आई एम रेडी टू गिव दैट अप इफ यू अलाउ मी। आई बार्गेन इट फॉर अ स्लीप। इफ यू डिनाई मी स्लीप, आई से नो, स्लीप इज माई प्रायोरिटी। You take my children, you take my grandchildren, you take my wife for sure, but you take my husband also. You take everybody. I am कोई जो भी मुझे बहुत प्यारा है, जिसके बिना मुझे लगता है कि ये जीवन मेरा, तो मैंने सारी जिंदगी आसपास उसी के। What is it that we are ready to ultimately look at, जहां मुझे अब कुछ सीकिंग नहीं करनी? That point, Shastra says, is Brahman. और ये जानने के लिए this prakand has come. How will you connect life to yourself? How will you connect creation to? यहाँ पे तो हमारे इंद्रियों से जुड़े हुए, you end this class and if we don't have continuity of Vedanta in Srishti, it will be literally impossible with the deterioration of our thinking capacities and the increase of the sensory indulgences, कि we will ever be able to arrive at this conclusion that our ancestors and rishis actually did come to. They came to an अवस्था within themselves जहां उनकी सीकिंग रुक गई, थम गई, खत्म हो गई। हमारे पास शायद शब्द नहीं है ये समझने के, because we wake up as a seeker. We go to sleep as a continued seeker. We are hoping next day morning I will continue. नींद तो बीच में, like I said, as a kid, नींद तो बीच में इंटरप्शन हो गई, क्योंकि अभी चाहिए ना मुझको, तो वो वक्त चाहिए, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। That where whatever I'm seeking, it's a big wisdom if we even understand what we are seeking. Most of us don't want to know this because it's too complex for our simple minds. What am I seeking? कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे बस दो शब्द प्यार के कोई बोल दे, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे, मुझे थोड़ा सा, बस मुझे थोड़ा सा, बस मुझे थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा ही होता है क्या? इतना थोड़ा तो शायद, है ना, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा, मुझे और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। तो उतना थोड़ा ही नहीं मिला क्या अभी तक जीवन में? मतलब वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। हमको जो लगता है थोड़ा 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 थोड़ा, दैट इज नॉट थोड़ा। वी वांट ब्रह्मन, दैट इज फाइनल। क्योंकि जब तक हमें वो नहीं मिलता है, तब तक हमारा ये खत्म नहीं हो रहा।
You can't wish it away. You can't disappear it. You can't pretend. You cannot claim yourself to be anything as long as you know you are seeking, even if it is seeking Brahma Vidya. As a seeker of Brahma Vidya, what are we? We see ourselves as incomplete. We see ourselves as individuals. We see ourselves as fact of life. I'm going to say this. We see ourselves as not happy, not satisfied. We are seeing ourselves as present situation is बहुत अच्छी है, लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव, लेकिन आई एम नॉट satisfied with what I have. I want something little more. So that little more tells us avidya is our upadhi. I am not complete in my cognition. शास्त्र says जिसको ये completeness का cognition हो गया है, वो जान गया है कि मैं स्वभाव से ही पूर्ण हूं। वो जो सोई हुई अवस्था में मुझे मिलता है ना शांति, और जो सोई हुई अवस्था में मुझे अद्वैत का एक अनुभव है, वही मेरा जागृत में भी है। इट इज नॉट सेपरेट, भिन्न अवस्था नहीं है वो। When a jnani goes to sleep, people ask a question, does he also get dreams? He, she, आते ही होंगे जरूर, क्यों नहीं, मगर क्या वो जीव है? जीव भाव means what? I seek. No, as I said, when I get into this kind of a reflection, then I feel बहुत सारी workshops करनी चाहिए, because every thought needs a lot of exercise behind. You know, every thought needs to be decoded. This is all easy to understand, but जब अपने पे काम करना होता है ना, तो every thought, if I say I am a seeker, what all do I seek? We are not aware of this. So Shastra has said, ये जो पंच महाभूत ब्रह्मन से आए हैं, ये ब्रह्मन क्या है? वो तुम ही हो गई। अब ज्यादा इसको एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने को जो समझे हो वो नहीं हो ना। एट दिस पॉइंट एवरीबडी गेट्स लॉस्ट। मैं जो अपने आप को समझू वो नहीं हूं, मैं ब्रह्मन हूं। लेकिन ब्रह्मन मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ब्रह्मन इज शब्दातीत, ब्रह्मन को कोई जान नहीं सकता। तो नो, इट्स अ मेथड, it's a method. I very often, maybe because being housewives and being not literally a housewife, but cooking, okay, let's say, whoever cooks a lot. उसके examples ना दिमाग में cooking के घूमते रहते हैं, because so much time goes into cooking. Now, one time you're baking a cake and experimental mind, इसको इसके बाद ही डालना जरूरी क्यों है? इसको मैं पहले डाल देती हूँ, या इसको मैं नहीं डालती, will the outcome be the same? वो जो measure, in fact they are so particular, oh my god, they are so particular about milligrams भी उनको measure करने होते हैं. So unlike our Indian mothers जो मुट्ठियां भर भर के, that is their measure. एक जने का खाना एक मुट्ठी, you know. हाँ, कितना दाल बनाना है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 मुट्ठी चावल, कितना है, 3 मुट्ठी, that's their measure. Perfect. No. You must have so many grams of this into so many milligrams of this. But this has to follow an order. Now, if
whatever you are seeking in life, and you are able to connect that to your actions, to your search, are they validating? Hmm. That pursuit of life, connecting us to this world जो हम जिसमें जागे हैं, उठे हैं, बात कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, सीख कहाँ कर रहे हैं? दैट जगत इज ऑल्सो ब्रह्म, कम फ्रॉम ब्रह्म, माया उपाधि. फर्स्ट थिंग, you are Brahman. That is Vedant in, I can't call it a nutshell, it's the whole of Vedant. You are Brahman. What is this Brahman? तो फिर मुझे तो क्या कुछ नहीं, मतलब I can't know it as a word. And if I say I am consciousness, and let me just sit thinking I'm consciousness, pure consciousness. Brahman is pure consciousness. Who am I? I'm pure consciousness. भूख लगेगी तो और किसी ने बना के नहीं दिया. प्योर कॉन्शियसनेस का क्या हुआ? Will you remain abided in it? That pure consciousness is just a way of connecting. कि हम ये जो इंद्रियों से व्याप्त जीवन में उलझे, रिश्तों को सत्य मान के, अपने को सत्य मान के, इस शरीर को सत्य मान के, अपनी भावनाओं को सत्य मान के, अपने विचारों को सत्य मान के, ये जो हम सारा सत्य मान के हम जीवन जी रहे हैं, ये सारा का सारा माया उपाधि है. The day this gets clear to us, our world changes. I'll repeat this. जो भी हम सत्य मान के जी रहे हैं, अभी तो हम सभी कुछ सत्य है. दुनिया सत्य है, मेरी भूख सत्य है, मैं सत्य हूँ, मेरी भावनाएं सत्य हैं, मेरी सोच सत्य है, मेरी ईगो तो बहुत सत्य है. मैं सत्य हूँ, बाकी मिथ्या हो सकते हैं. मैं मिथ्या नहीं हूं, मैं सत्य हूं. आई एम सत्य. That I am such a strong sense of reality with which I am entertaining or I am interacting in the world. ये सारा का सारा मेरे रिश्ते को मैं सत्य मानती हूँ, मेरे क्या व्हाट एल्स इज देयर, सब कुछ तो मेरे लिए सत्य है. मेरा सबसे बड़ी चीज विच फैसिनेट्स मी, मेरे दुख को मैं सत्य मानती हूँ. Am I making sense? Is anybody lost here? मेरे दुख को मैं सत्य मानती हूँ. अरे तुम्हें चाहिए क्या? आनंद. अब तुम सत्य किसको मान रहे हो? कि मुझे आनंद नहीं है. You see the contradiction? We all want happiness, but what are we holding on to? That I want more happiness than what I have today. That is why I'm unhappy, no? मेरे दुख का कारण क्या है? कि जितना मुझे आज आनंद मिला है ना, उतना इनफ नहीं है मेरे लिए. I'm really telling you, this was absolutely a fantastic real life experience. A helper was waiting outside. उसी ह्यूमिड वेदर में आराम से बैठी हुई है अपने मोबाइल पे, क्योंकि जिस घर में जाना है उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे वो वहीं चाहिए. She can't go back home and come back. So in complexes like this, they have to spend time. The guards don't allow them to sit here there. So she was sitting outside the thing. आराम से नीचे बैठ के अपना एंजॉय कर रही है. एंड मैं तो वही उसको देखते हुए निकल गई. अच्छा वेदर बहुत अच्छा है, नाइस नाइस नाइस.
halfway through, इतना humid. This person who's been working in somebody's home and etc etc, वो आराम से मोबाइल बैठ के उसी पसीना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट एंजॉय कर रही है अपना whatever she is watching in her broken screen mobile. वो एंजॉय कर रही है अपना, वेटिंग फॉर मैडम जी जब बुलाती हैं तभी जा सकते हैं, नहीं तो मैडम जी आने नहीं देती है, अंदर गुस्सा करती है। तो शी इज वेटिंग आराम से अपना 15-20 मिनट। मैं आधा रास्ता चल के वापस आने की सोच रही हूँ, बहुत ह्यूमिड है, बहुत। हैप्पीनेस, हूज गॉट मोर हैप्पीनेस? उसके अपने दुख नहीं है क्या? उसको अपने दुख है। No one is ever satisfied with the present state of their happiness. And that is a lakshan of avidya. Present state of situation and happiness में हमें पूर्णता नहीं दिखती. Whereas in Bhagwan's creation, yes, वो तो नहीं कह सकते हमसे ज्यादा, कभी वो ज्यादा कभी हम ज्यादा, वो भी तो घर जाके कंप्लेन ही कर रहे होते हैं. So it's okay. Not that they have found more happiness, you know. But they have found happiness in little things that we have got lost with, probably. You know. The point is, this world in which we find our life, जीवन है हमारा, शास्त्र बहुत पर्टिकुलर है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो प्राप्त वस्तु है. आपको आपको कुछ नहीं करना उसको. You don't have to create it, you don't have to manifest it. You know, there was a school of philosophy that went for quite a few years, manifestation, law of manifestation. आप जैसा मतलब, if you want to manifest something, 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 something. So it's a law of manifestation. अरे, everything is acceptable. Yes. So this jagat in which we are looking for something, this everything is what? Maya Upadhi. Start from there. सब कुछ जो मुझे रियल लग रहा है, and this can be a topic of reflection, गहरा, करेक्शन, गहरी, जो कुछ भी मुझे चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर इट इन अ जगत विच इज माया उपाधि. तो क्या वो टिकेगी? उसका मटीरियल ही माया है, with which the world is made. What is this material? Maya. What is Maya? It is only Brahman and its manifestation. उसी की शक्ति है, उसी का उद्भव है. What is it made up of further? Okay, fine. Now, जीव को माया तक पहुंचने में मुश्किल है, तो शास्त्रों ने कहा whatever lakshanas you are seeing, you see inertness, पत्थरों में, mountains में, trees में, slow movement. You see very, very slow movement. That is one grade. Then you see very quick, the sprint of a deer and the tigers, and you see briskness in certain people. There is, and with a lot of passion and with a lot of focus, and they can get out and do. एक क्वालिटी ये दिखती है, और दूसरी दिखती है जो शांति से हो रही है, विजडम है. बस इसी को उन्होंने सत्व रजस तमस कहते हैं. 3 क्वालिटीज. ब्रह्मन उपाधि, माया उपाधि. This Maya is Trigunathma. If the Jagat is Maya Upadhi, then Jagat is Trigunatmik. It's also 3 gunas. If the Jagat is 3 gunas, then I am also, my Sharir is also Jagat. Because वो यहीं छूट के जाता है. This is very important. It belongs to the waking world
and it's left in the waking world. जब हमारा जन्म होता है और हम जागृत अवस्था को एक्सपीरियंस करते हैं, हम यहीं पे इस शरीर को छोड़ के जाते हैं। ये शरीर हमारे साथ ना स्वप्न में आता है ना डीप स्लीप में जाता है, यही छोड़ते हैं। इसी शरीर के बढ़ने में the sattva rajas tamas of the various elements, from that Brahman came space, air, fire, water. I think the Panchikaran should be clear to everybody. Otherwise, I felt the last class was pretty clear, in which it was explained the sattva of each component, and that's how this body is now given to us. Our antakaranam, जिसको हम मैं करते हैं, ये अंतकरण भी माया उपाधि है. That's a fascinating part. It is not that the अंतकरण मेरा है, मैं हूं मतलब. What is antakaran also? Maya upadhi. That means mano, buddhi, chit, ahankar. All of it is from the same sattva, rajas, tamas ke components as we saw. Pranas, ये प्राण भी मैं नहीं हूं. Pranas is also sattva, rajas, tamas composition. मैं हूं कहां? मैं है कहां? Am I making? This, he says, is the variations, differences that we are finding in the world. इन सिर्फ उपाधि भेद में है, सत्व रजस तमस के डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में है. Everybody has a very unique taste for, say, tea or coffee, whatever. I had somewhere tea. They asked me many questions. कैसी अच्छी लगती है, दूध ज्यादा कम, चीनी ज्यादा, चीनी कम, चाय पत्ती कितनी, बहुत प्रश्न बहुत लंबे होते गए, स्पेसिफिक. सो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे. Then I asked them, आप कैसी पीते हो? Very different. And whoever made it, when you looked at the two cups, अलग थे. चाय है. But what made it, one was milky, the other was darker. चाय है. Same. Water, sugar, tea leaves, milk. एक गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी दूधमयम, दूसरी काली काली चायमयम. वेरिएशन क्या था? What was the variation coming from? From? Milk. दूध. From? Milk. Milk only. The procedure of making it. Okay, only. The taste, the requirement, the taste what you wanted. Okay. From the ingredients, Dipti ji. Sorry? From the ingredients. From the ingredients. Also the amount of tea. For the proportion of the three. Very good, Rajni. What are the three? Water, sugar. Okay, forget water is common. Let's take water as Brahman. Common है दोनों में, वो तो बदल नहीं सकते आप. Water तो चाहिए चाहिए. It has to be the standard. You have milk, you have sugar, and you have tea. In the base of water. आपने कितनी चाय पत्ती डाली, कितना दूध डाला, कितनी चीनी डाली? On a transparent glass, you have two entirely different cups of tea. It's the proportion in which it was mixed. और कॉम्प्लिकेट करना है तो उसमें तुलसी डाल दो, अदरक डाल दो, दालचीनी डाल, पता नहीं क्या क्या डाल, और यूनिक टेस्ट चाहिए आपको तो you can add
anything. Composition of the three, very good word. The proportion of the three is totally different cups of tea. Same thing. All of us, पूरा creation, बस ये तीन के proportion की variation है. सत्व रजस तमस के proportion. बस यही proportion में ही फर्क है. Base is the same. What is it? आप भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण है, वो सोया हुआ डॉग भी ब्राह्मण है, पाइथन भी ब्राह्मण है, एलिफेंट भी ब्राह्मण है, बर्ड भी ब्राह्मण है, डायनासोर 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 राइट, डायनासोर डायनासोर भी ब्राह्मण है, था ब्राह्मण. प्रपोर्शन वेरीड. दिस प्रपोर्शन वेरीड कहां से आया कि भैया मेरा ये प्रपोर्शन और आपका ये प्रपोर्शन वेरिएशन कहां से आई? किसने करी? हैज भगवान बीन सिलेक्टिव? उसकी मर्जी से मेरा आज मूड है कि आज मैं इस वाले इसको इतने प्रपोर्शन में दूंगा, उसको मैं उतने प्रपोर्शन में दूंगा, उसको मैं उतना प्रपोर्शन दूंगा. भगवान के पास ही वो विल है कि वो कितने कितने प्रपोर्शन दे सकता है सबको. क्या ये भगवान सबको प्रपोर्शंस दे रहा है अलग अलग? नो. कहां से आया? यू हैव टू गेट बैक टू द टेक्स्ट. आई एम ओनली टॉकिंग फ्रॉम द टेक्स्ट. कहां से आया ये डिफरेंट प्रपोर्शन? कर्म संचितम. our own संचित कर्मास, our own collected कर्मास, जिसका फल हमको ही भोगना है. Why has this sharir come about with this proportion? To give me the phal. This is the best equipment possible, Bhagwan felt, which can give me the phal for my own karma that I have to bhoga ayatanam. I have to have bhoga for. This sharir is bhoga ayatanam. And I'm saying this very, very specifically because I know the words sometimes that we hear in the classes, they ring in us at the right time. शरीर हमारा जागृत अवस्था ही है, उसी का पार्ट है, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी का अंग है. जागृत अवस्था में ही शरीर है. ये शरीर यही छूटता है. It's fascinating thought. तो जब हम दह अग्नि देते हैं, हम क्या करते हैं? हम जीव को जला रहे हैं क्या? Or as the Parsis, they leave it for the vultures to consume the body. Or as sadhus and sannyasis, बोरी में डाल के उसको प्रवाह कर देते हैं. ये हिस्सा ही इसका है, जागृत का हिस्सा है, जागृत में ही रह जाता है. ये जो बैठा है अंदर, जो अपने आप को जीव समझ रहा है, वो इससे तादात्म्य करा हुआ है, अपने सुख दुख को भोग रहा है. By experiencing whatever, like each one of us has our own unique dreams. Coming from where? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना. अरे जब हम सब एक जैसे लोग हैं, सबकी आंखें हैं, सबके कान हैं, सब कुछ, even when you see the same things, our dreams can be different, will be different, not can be. दो लोग सेम सपना भी नहीं देखते. क्या करते क्या है हम लोग? कुछ भी नहीं करते ठीक से. हम वेकिंग में ठीक नहीं है, हम ड्रीम में ठीक नहीं करते, मतलब सब अलग 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 अलग, अपना अपना इंडिविजुअल. एवरीथिंग इज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अपने लिए बना. आई कॉल इट डिजाइनर वर्ल्ड. वी आर इन द एरा ऑफ डिजाइनर्स. All of us need designer clothes, designer shoes, designer bags, designer this, designer that. That gives us a designer personality. Bhagwan has already given us a designer world, unique only to us.
What is it? Nana Upadhi. All these different upadhis that we are seeing. What is it? These upadhis are made up of the three different gunas proportion, aropit on oneself, identified with those gunas, aropit on oneself, and we call ourselves, I am this, I am that. There was an exercise, if anybody else wants to do. It's a good exercise. I think most of us as girls anyway, by default, get to do it. But when you are a Vedanta student and you want to break an adhyasa sometimes, कि मैं देख तो लूं मैं जब टूटे टूटे, but I need to at least get the hold of this thought. What are the आरोपित अध्यासास? हमने अपने पे क्या आरोपण किया है? अभी अभी हमने देखा ना, ऑल दीज जाति धर्म एक्सेट्रा, हमने आरोपण किया है. व्हाट इज आरोपण? वन टाइम जस्ट डू एन एक्सरसाइज, वट एवर कम्युनिटी यू बिलोंग टू. आई डिड दिस वंस, मुझे बहुत मजा आया. इफ आई एम born in a Gujarati family, I don't identify with Gujaratiness. Who are you then? The minute I say I'm a Gujarati, mental करना है exercise और कुछ नहीं करना. The minute I say I'm a Gujarati, मुझे ढोकला भी खाना है, बनाना भी आना चाहिए, खांडवी भी आनी चाहिए, मुझे गरबा भी आना चाहिए, मुझे ये भी सब सब कुछ सब. There's a व्यवहार that starts, which is associated with that community. But when you say, okay, I'm not, I'm a human being. I'm just a human being. If I say I'm a human being, am I now only restricted to dhoklas and khandvis? Do you see the habits? आप अगर अध्यासा पकड़ लेते हैं, आरोपण, हमने क्या आरोपित किया है? The verse says we have done आरोपणम of जाति, नाम, etc. एक एक करके आप आरोपण तोड़ो. As a therapist, if I'm attending a professional conference, supposing so I write Dr. Deepti. What is doctor? What is doctor? Upadhi. It's an upadhi. Earned by whatever, but it's an upadhi. आप उस उपाधि को छोड़ो. अगर मैं उस उपाधि को रखती हूं तो मेरा व्यवहार बदलता है. It's a very important point. I don't know if I'm communicating well enough. Okay, great. अगर मैं उपाधि पकड़ती हूं, मेरा व्यवहार इंस्टेंट बदलता है. It's conditioned by it. अगर मैं उपाधि छोड़ती हूं, मेरा व्यवहार बदल जाता है. I may be conditioned by something else now. But I am not. Why am I saying I'm conditioned by something else? Because I am still not identified with my own Swarupam. मगर हम अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं? जन्म जन्मांतर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम. Born again and again in my mother's womb, in a mother's womb, not my mother's womb, in a mother's womb. Born again and again in a mother's womb. हम क्या कर रहे हैं? Identified with that upadhi. And as we are identified with that upadhi, we have collected certain traits, characteristics, जिसको हमने मैं समझ के हमने उनको अपना अपना बना लिया. And we did certain, that's a different prakaranam, it's not here, but at least it's clear now. We've accumulated sanchitam. बस उसी में से भगवान has no will to give us a certain proportion. वो तो सबसे बड़ा, I think he is the greatest, free रह के भी he is the greatest follower of his niyam. That's what Krishna says. I have no niyamas to follow.
but I still follow all the niyamas when I take avatar. He doesn't have a will to give somebody something and somebody something. वो अपनी मर्जी से थोड़ी दे रहे हैं. हम तो फिर भी अपनी मर्जी से बहुत कुछ करते हैं. हम तो सभी कुछ अपनी मर्जी से देते हैं. कोई हमें प्रिय है तो उसको थोड़ा ज्यादा दे देते हैं. कोई अपना प्रिय नहीं है तो. I remember somebody said a new wedded girl and an experience that left with her like a trauma. The mother-in-law had preserved something in the fridge to give to her daughter. छुपा के from the daughter. उपाधि. अब डेलिबरेट किया ना ये. बच्चा तो नहीं करता. अगर वो करता है उसको तो कोई डेलिबरेशन नहीं है. उसको वो फल नहीं मिल रहा. डेलिबरेशन है. इस डेलिबरेशन का फल कर्म किया है तो फल तो आना है. सो डेलिबरेशन का फल कलेक्ट होता है. लाइफ गिव्स अस सो मच अपॉर्चुनिटी कि हम एक जन्म में मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन हम पुनरपि जननम बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन. सो संचित कर्म से हमें ये शरीर जो मिला है, आत्मनि आरोपितम, सब हमने अपने ही ऊपर. इट इज ऑल आर आरोपण, ऑनेस्टली स्पीक. लोक व्यवहार में आई स्टिल रिमेंबर I was told, why don't you continue writing? You are eligible to write doc. The world will give you more respect. World will see you in a different light, which is a fact. They do. यहाँ स्ट्रगल हो रहा है अपने उपाधि को तोड़ने का. Just because the world will give me more respect, they don't understand it's an upadhi. I understand it's an upadhi. तो छोड़ना किसको है? जो समझता है. उन्हें तो पता. they'll see, they'll think you're nobody. Very good. Eases my vyavaharik life then. Do you get the point? Upadhi is where we have identified with. और उसी से हम इकट्ठे करते हैं अपने कर्म संचितम. और ये शरीर जो हमें मिलता है और एक प्रारब्ध काल मिलता है. शरीर is a given. However many science experiments happen, I really don't know भगवान क्या करने वाला है. Without a womb, you can be born in a test tube. I really don't know where science is going to take and what is going to happen of all this system. वो अलग ही विषय होगा. I guess that's भगवान's way of taking full resolution. पूरा प्रलय करने के लिए उसका ये मेथड है. Where the jivatva bhav is going to go on getting so strong and the actual expression of consciousness through the upadhi is virtually going to get diminished. But anyway, shariram sukha dukkhanam bhoga ayatanam uchyate is called. And the same thing. So what is bhoga sadhanam? Your sukshma sharir. As I just said, हमें जिंदगी में सब कुछ मिला है, but हमारा आनंद क्या उसके पैरेलल है? It's a question I ask everybody and myself. What do we not have? Is our happiness proportionate to that? We want a little more. That means sukha dukha. Sukshma is where mind is where we experience our sukh and dukh. And this will continue anadi, avidya. Avidya is anadi. As long as I do not know who I am, ये ब्रह्म स्वरूप जब तक मैं नहीं जानती, there is no escape from it. यही कारण है मेरा कि मैं पकड़ लेती हूँ हर उपाधि को. What are the other upadhis? Make a list. I'm a mother, I'm a sister, I'm a wife, I'm a this, I'm a teacher, I'm a friend, I am a writer, I am a
teacher, I'm explorer, I am an adventurer, I am a Hindu, I am a this, I am a that. इतने तो बहुत होते हैं एक जीवन बताने के लिए. Enough. We can fill our life with this much उपाधि. और इसमें हम अपने राग द्वेष चला देते हैं. And because we keep it on raga dvesh, it is a collection. Therefore, upadhi, three. These three upadhis. Which three? Sthula sharir, sukshma sharir, karana sharir. Avidya is the karana sharir. These three upadhis, he says, other than this, because of these three upadhis, we see ourselves other than Atma. अवधारयेत, हम उसको ऐसा धारण कर लेते हैं कि हम आत्मा नहीं है. Because of these three upadhis and our identification with them. Then panchakoshadi yogena. Now he talks about three upadhis, sthula, sukshma and karan. Now panchakosh is another way in which Vedanta has explored the human experience. That Atma Anubhav is shrouded as if by these identifications of 5 layers. It's basically tadatmyam. It is basically identification with a certain kind of a thought habit. If I say I'm the body, ye ho gaya annamaya. If I am the feelings, manomaya, etc., etc. This is panchakosha adi. Tat tanmaya ivastitaha. This atma as if remains tanmaya. Tanmaya means absorbed. Shuddha Atma. This Shuddha Atma remains tanmaya with these panchakoshas. Neela vastradi yogena sphatiko yatha. Just as a colorless crystal is seen blue, pink, when it's kept adjacent to blue or pink flower. The crystal as if has also become blue or pink. In the same way, Atma which has got no upadhi, शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, असंग है, वो इन पंचकोशों के साथ तन्मय होके ऐसे लगती है जैसे ये भी ये सब है. That is why we get the experience of I am unhappy. So if you've identified with the Annamaya Kosha, Atma identified with I am short, I am tall, etc., etc., etc. Okay. We'll take this in the next class. Just wanted to warm up. Is that okay? Warmed up. So we'll end the class. Nicely warmed up. Nicely warmed. Good. I also needed the warming. Someone can do the ending. Shanti mantra. Yes, Divya, please do. I was seeing where are you. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ स्वस्ति प्रजाभिः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्.
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Don't think there's any question. Is there any question? We'll see you next week. Hari Om. धन्यवाद दीप्ति जी। धन्यवाद.